Morning, good evening. As we begin the second international Sammelan, my apologies to everyone at this point, beginning as you join to observe uh, the, uh, the, we assure ourselves we join in a very wonderful atmosphere with music. Let's have everybody muted. As you join, please mute, and the co-hosts, please mute everybody as people join. Very essential so that during the program that there is no disturbance, and this will be the code of conduct for all our meetings. It's really request and also request as many people as can come on live on the video to be that way. Be much easier if you're live on the video to see your expressions, particularly if you are presenting. It's going to be even better. So, having said this is just a little housekeeping announcement. Let's all smile. It's wonderful to smile. I get a good greeting by smiling rather than saying hello. Smile is a much better way of greeting than even saying hello. Hello is an English word. It's neither Gujarati nor Marathi nor Hindi. And so let's just smile. Smile is a universal greeting. We are very honored to have such a wonderful group together today. It's just amazing to see how much interest is there in sharing our own creativity and all that we get inspiration from, the divine inspiration. I'm going to go forward and say a couple of things about today's meeting, which I've already forwarded. The list has been made very, with everybody being honored in their timings as much as possible. So I would request, I was able to give 4 minutes for each presentation. And I have a timer here that will be seen as I start sharing the 4 minutes. You'll see the timer on in everybody's screen. And as you present your poem or ghazal or whatever it is, you will have the timing. And we request that you stay to the timing if it's possible. There's been a couple of exceptions I've granted because they've requested it ahead of time, which I think is a very important aspect to remember for the next meeting. Also, the meeting is recorded. So if you wish to receive the recording, please put in your email address in the chat box. Next one, I'm going to demonstrate to you how you appreciate. Appreciation is done on a Zoom in a very typical way. Without GM mute yourself, please. Mute yourself. Let's everybody go raise your hands up. And this is called air clapping. Air clapping. Air clapping is very fine. It's wonderful. And we know. And then smile. There's something else we do. Just thumbs up. Something else we do. We also have the mudra, Gnana mudra, or also, I'm aware of it. Gnana mudra is, I'm aware of it. Thank you. I appreciate you. As an appreciation mudra. And you go to both ways, it's going to be both brains working. How is that? So this is the way to appreciate. Everyone is requested to use chat box as much as you can. And the chat box, every poem is there. Please start putting in your turn may not be there, etc., etc. Please start putting in some nice feedback because this recording will have a lot of chat box. I can make a PDF out of this and go forward. So, having said all this, this is, it will be a first time we're going to handle so many people on a Zoom with so many things that happening internationally all the way to Australia, the US. So it's going to be fun. It's going to be very joyful. And
So all that being said, we'll just get going with the program. And what I'm going to do is I'm going to just start with the first presenter, and we'll just have to, the presenter's name will be called, and as soon as that is done, we'll just have that presenter unmute themselves and then start proceeding. So what I'm going to do here, let me just have just a few seconds here just to locate my notes here so that I can. And the first will be Preeti Ben, Dr. Preeti Ben. And let's see. Okay. So Preeti Ben, unmute yourself, please. And yes. Go ahead. રામાયણ પર કવિતા છે કલિંદભાઈ, થેન્ક યુ. વશિષ્ઠ ઋષિની કામધેનુ એટલે રિટાયર થયેલા સસરાની કમાતી ધમાતી વહુ ઈચ્છા પૂર્તિ માટે હોય છે. સીતાનો વનવાસ અને આભૂષણનો ત્યાગ એ તો વર્ષોથી વસૂકી ગયેલી સ્ત્રીની મનોદશા જણાવે છે. રામનો રાજપાટનો ત્યાગ અને જંગલ તરફનું પ્રયાણ એ તો આજના સુવિચારો, સુકર્મો અને સુસમાજોનો વનવાસ દેખાય છે. કૈકૈયના વચનોની જીદમાં તો આજના એક નીચ સમાજનું ડોમિનન્સ દેખાય છે. રાવણનું સીતાહરણ એ તો સુચારિત્રની એક હોળી દેખાય છે. તો મધરસ્તે સીતા માટેની જટાયુની ચીસોમાં મને તો ક્યાંક જૂના જનરેશનના સંસ્કારોની ચીખો સંભળાય છે. રૂપવતી મંદોદરી રાવણની સંપત્તિથી પણ મોહિત નથી. એમાં તો આજની કચડાયેલી અને રાવણ જેવા રાક્ષસોના વનમાંથી ઊભી થયેલી એક અવેરનેસ વાળી આધુનિક સ્ત્રી દેખાય છે. લવકુશના આશ્રમના ઉછેરમાં આજની ગુરુભાવનાના દર્શન થાય છે. તો મેરુ પર્વતની જડીબુટ્ટીની હનુમાનની સારવારમાં મને સમાજની આયુર્વેદના મહત્તાના દર્શન થાય છે. છળ, કપટ અને સામાજિક પ્રપંચ લીલાઓમાં આજનું ટેરરિઝમ દેખાય છે. ધોબી ઘાટ કેટલો પ્રચલિત શબ્દ, એમાંથી તો સીતાનો વનવાસ અને હિન્દુ સમાજના પતિઓની એક મોનોપોલી દેખાય છે. આમ જોવા જઈએ તો આજના રોજના સામાન્ય જીવનમાં પણ રામાયણ સમાયેલું છે. જેમ કે સવારથી રાંધણ ગેસની રામાયણ, તો ઘર નોકરની રામાયણ, સાસુ વહુની રામાયણ, તો ઓફિસમાં ડેડલાઇનની બોસની રામાયણ, અને આખો દિવસ પૂરો થાય ત્યાં સુધીમાં તો રામ, સીતા, રાવણ ને હનુમાન બધા જ પાત્રો ભજવી જાય છે. એ જ આજનો કોમન મેન. થેન્ક યુ. Thank you very much. Next is Santosh G, and following that will be, just be ready. Let me see here, I have it here. After Santosh G will be Dr. Rajan Lakhe. So please get ready if you're there. Santosh G. Namaste. So
I have shared the poem in the WhatsApp group also. So this poem is what I kind of going through for last 47 days. So trying to, recently I had my father left us. So we're just trying to convey my thought process in this poem. न थी आहटे न था कोई दस्तक, न थी आहटे न था कोई दस्तक, जो भी कुछ था बस नतमस्तक। एक गहरी खामोशी जूझता समा, एक गहरी खामोशी जूझता समा, चकनाचूर उम्मीद की गूंज दूर तलक। न थी आहटे न था कोई दस्तक। This is the feeling arised when I saw that. So उम्मीद, right? सबको अपनाकर जिसने खुशियां बांटी, सबको अपनाकर जिसने खुशियां बांटी, नम आंखों की ख्वाहिश, नम आंखों की ख्वाहिश, उनकी बस एक झलक, न थी आहटे न था कोई दस्तक। हंसते मुस्कुराते जिंदगी को जो जिया, हंसते मुस्कुराते जिंदगी को जो जिया, चारों ओर है फैला, चारों ओर है फैला, फूलों से उनकी महक, न थी चा आहटे न था कोई दस्तक। जो भी कुछ था, जो भी कुछ था बस नतमस्तक। हर मुसाफिर का मंजिल तय उसने किया, हर मुसाफिर का मंजिल तय उसने किया, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी है ये सड़क, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी है ये सड़क, न थी आहटे न था कोई दस्तक, जो भी कुछ था बस नतमस्तक। This is the final concluding lines. So we say Amrut, right? Amrut. अमृत, अमृत में मृत का मतलब समझाया जिसने, अमृत में मृत का मतलब समझाया जिसने, मुस्कुराता चेहरे में था सारा सबक, मुस्कुराता चेहरे में था सारा सबक, न थी आहटे न था कोई दस्तक, जो भी कुछ था, जो भी कुछ था बस नतमस्तक। एक गहरी खामोशी जूझता समा, एक गहरी खामोशी जूझता समा, चकनाचूर उम्मीद की गूंज दूर तलक। नमस्ते। Thank you very much. That was awesome. It's excellent that I hope this timer is helping people rather than hindering. Everyone is really aware of it. I think awareness of time is very helpful here. So Dr. Rajan, I'm pronouncing the name correctly, I hope. And after that, Dr. Rajan will be Dr. Rajan Lakhe. Please also mention where are you from, just your name and where are you from, okay? Pallavi Shah after that. Dr. Rajan Lakhe, is he here? Dr. Rajan Lakhe, he's not here. I think he's not available. He's not available, okay. So we move on. I think so. Okay, we move on. Pallavi Shah. Has Pallavi been there? હું પલ્લવી શરદ શાહ, સાન્તાક્રુઝ, મુંબઈ, ભારત. કલિંદભાઈની પ્રેરણાથી અને પન્નાબેનના સહયોગથી તક મળી, ઝડપી લીધી. મેં મને કવિતાના જૂથમાં જોડી દીધી. ધૂળ બધી ખંખેરી નાખી અને સૂતેલી અભિલાષાને જગાડી દીધી. હવે કાવ્ય છે શીર્ષક વરિષ્ઠ નાગરિક, એટલે કે સિનિયર સિટીઝન. હું વરિષ્ઠ નાગરિક, હું વરિષ્ઠ નાગરિક, ઉંમરથી વરિષ્ઠ, દિલથી નહીં, ઉંમરથી વરિષ્ઠ, દિલથી નહીં. હવે અવકાશ અને મોકળાશ, હવે અવકાશ અને મોકળાશ, મારી ખુમારી મારે સંગ. હવે સમય જ સમય, હવે સમય જ સમય, સાહિત્ય વાંચું,
कविता रचू, प्रवास खेडू, रखड़पट्टी आदरू, साहित्य वाचू, कविता रचू, प्रवास खेडू, रखड़पट्टी आदरू, प्रेम वाल वेचू, समाज सेवा करू, प्रेम वाल वेचू, समाज सेवा करू, सत्संग पचावू, संगीत माणू, सत्संग पचावू, संगीत माणू, मन मोजीली हूँ, धारू ते करूँ, मन मोजीली हूँ, धारू ते करूँ, हूँ वरिष्ठ नागरिक, उम्मरथी वरिष्ठ, दिलथी नहीं। बीजू शीर्षक छे जिंदगी। ओ जिंदगी तने शू कहूं, ओ जिंदगी तने शू कहूं, तू देखाड़े कदी सुख तो कदी दुख, तू देखाड़े कदी सुख तो कदी दुख, कदी तू ऊंचे ऊंचे चढ़ावे तो क्यारेक नीचे पछाड़ी दे, कदी तू ऊंचे ऊंचे चढ़ावे क्यारेक नीचे पछाड़ी दे। Please mute yourself. Please mute. Go ahead. I think she got muted too. What happened? Unmute yourself, please. Pallavi Ben, unmute yourself. This is what happens when people start unmuting. Proper. Sorry, can Go ahead. Just pick up from wherever. तू कदी सफलताने शिखरे बेसाड़ी सुखनो सागर वहावी दे, तो कदी निष्फळतानी खाईमां नाखी दुखना दरियामां फंगोળી दे। ओ जिंदगी तने शुं कहूं, कदी चोक्का छक्का मारता मारता सदी फटकारे, कदी चोक्का ने छक्का मारता मारता सदी फटकारे, तो कदी शून्यमां गरकाव करी दे। ओ जिंदगी तने शुं कहूं, मानवी पासेथी तने छीनवी लेवानी सत्ता छे उपरवाळाना हाथमां, मानवी पासेथी तने छीनवी लेवानी सत्ता छे उपरवाळाना हाथमां, तो तू शाने करे मद आटली बधी इतराई छे शाने, तू शाने करे मद आटली बधी इतराई छे शाने। आभार। Thank you very much. I have a request for everybody. Please post your poems on Chalo Kavita Kariye. We have a group, active group going on, and we love to have it in print so that we can enjoy it at our leisure as well. Fantastic poems coming through so far. I really appreciate the timing that everybody is keeping. And again, for future also, please mute yourself. This is a very strictly conducted meeting, and we would love to honor everybody who is reading and not getting disturbed. Okay, so really appreciate your cooperation in this. So the next one, did I announce that or not? Okay. All right. Dr. Rasage. Dr. Rasage is next. Rasage. Dr. Rasage, sorry, my. No problem, sir. Go ahead, sir. Okay, नमस्ते। मैं मराठी में पेश कर रहा हूं, और जिसे महाराष्ट्र की लावनी कहा जाता है, वो लावनी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हर एक लेडीज को हमारे यहाँ गजरा मालूम है, जो मोगरा से बनाया होता है। वो हमारे पत्नी ने लाने को कहा, मगर मैं भूल गया, तो मैंने शब्दों में से मोगरा यानी गजरा उन्हें ले आया। तो वो लावनी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। श्वेतवर्णी टपोरा हजारी मोगरा, श्वेतवर्णी टपोरा हजारी मोगरा, प्रीत गजऱ्यात भरुनी अनाकी मोगरा, प्रीत गजऱ्यात भरुनी अनाकी मोगरा। ऋतू आला बघा मोहराया फुला, ऋतू आला बघा मोहराया फुला, निसर्गाने खजिना हा केलाय खुला, निसर्गाने खजिना हा केलाय खुला। कळी उमलाया अहो, कळी उमलाया माळण्या
आणा की मोगरा प्रीत गजऱ्यात भरुनी आणा की मोगरा प्रीत गजऱ्यात भरुनी आणा की मोगरा काठ पाकळीचा किती गोजीरवाना काठ पाकळीचा किती गोजीरवाना लई भरतो मना गंध होई गुना रात राणीला रात राणीला चिडवाया आणा की मोगरा प्रीत गजऱ्यात भरुनी आणा की मोगरा प्रीत गजऱ्यात भरुनी आणा की मोगरा काया कोमल अति धरा अलगद हाथी। ये लावणी थोड़ी द्वि अर्थी होती है, हाँ, जिसे श्लेष में कहा जाता है, तो जितना चाहे आप उतना मीनिंग बदल सकते हैं। काया कोमल अति धरा अलगद हाती बाई चुरगळण्याची मला वाटे भीती मऊ का भ्यात जीव ववून आणा की मोगरा प्रीत गजऱ्यात भरुनी आणा की मोगरा प्रीत गजऱ्यात भरुनी आणा की मोगरा। आणि लास्ट ऐसा कहा जाता है कि जो जो आखिरी ये है तो वो अध्यात्म की तरफ जाता है, लावणी हो तो भी। फुले ज्ञानेश्वरी वेल गगनावरी फुले ज्ञानेश्वरी वेल गगनावरी गंध विश्वातला तुम्ही आणा घरी गंध विश्वातला तुम्ही आणा घरी जीवाशी वाला गुंफण्या आणा की मोगरा प्रीत गजऱ्यात भरुनी आणा की मोगरा प्रीत गजऱ्यात भरुनी आणा की मोगरा आणा की मोगरा आणा की मोगरा। धन्यवाद। Despite not knowing much of Marathi, I think many of our Gujarati friends I could see smiling away and appreciating. Thank you very much. And so I think I said the next one, Dr. Gondhali. I'm pronouncing it right? Gondhali. Gondhali. And the next after that is going to be Dr. Chandraprakash Dokwal. So Gondhali, please, Gondhali ji, please begin. सर अनम्यूट करा. गोंधळी सर अनम्यूट करा. Everybody who joins, please mute except Dr. Gondhali. Mr. Gondhali ji. Okay. नमस्ते. मी मकरंद गोंधळी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, भारत। अब एक कॉमेडी पोएम है, जैसे वात्रटिका बोलते हैं, मराठी में है। इल्लिरपल्ली इल्लिरपल्ली दावनपल्ली घेऊन चिल्ली आणिक पिल्ली चालला दिल्ली। इल्लिरपल्ली दावनपल्ली घेऊन चिल्ली आणिक पिल्ली चालला दिल्ली। मध्येच बिल्ली मध्येच बिल्ली उडाली खेळली राहिली दिल्ली। आला गल्ली दावनपल्ली आला गल्ली दावनपल्ली। आगे देखिए। बिचार बापड घालून टोपड आलं माझ्या दारात। बिचार बापड घालून टोपड आलं माझ्या दारात आणि म्हणतोय तोऱ्यात, तुला बघून घे ना सांगतो, तुला बघून घे। बिचार बापड घालून टोपड आलं माझ्या दारात आणि म्हणतोय तोऱ्यात, तुला बघून घेईन। म्या म्हणलं, बाबा बघून घे नाहीतर घेऊन बघ, बघून घे नाहीतर घेऊन बघ। चालतं व्हायचं लगोलग। बिचार बापड फार घाबरलं, मागं न बघता पुढं पळालं, पळता पळता ठेचकाळलं आणि गटाराच्या पाण्यात बुचकाळलं। गटारातनं उठलं आणि भूतासारखं दिसलं आणि सारं गाव त्याला असंच हसलं। अभी लास्ट, आखरी, भारत माते पर है। भारत माते तुझ्याच साठी जगतो आहे, मरण ही हवे तुझ्याच साठी। भारत माते तुझ्याच साठी जगतो आहे, मरण ही हवे तुझ्याच साठी। या जगण्यातून या मरण्यातून अखंड तुझे गीत गावे, तुझे गीत गाता गाता तुझ्याच साठी मरण यावे।
भारत माते तुझ्याचसाठी जगतो आहे. धन्यवाद. थँक्यू. That was just amazing. I felt like dancing. Maybe we could dance too with some of these things. If I start dancing, please pardon me. Please put somewhere if we can get these poems. I know you may or may not be part of CKK, Chalakuriya, but somehow, please, coordinators Milind Bhai and Kalpana Ben, please make sure that these poems get into CKK. All right, I really appreciate that because these are fantastic poems. Appreciate that very much. The next one is Dr. Dokwal. After that, Asha Mehta, and then following Asha Mehta, Dr. Gopal Dhadphale. I'll take a few seconds to introduce him a little bit. Go ahead, Dr. Dokwal. Namaskar, everyone. This is my Hello. first. Hello. Can you hear me? Hello, yes. Namaskar. Hello, Namaskar. Namaskar. I am Dr. Gopal Mahadev Dhadphale, Oh, okay. Dadar, Mumbai 14, 1948. That young boy of 97. Other people, mute yourself, please. Mute Dr. Gopal. Yeah. Mute. So, No. I will give my poem in Marathi. In short, I can give you what is there in that poem. The poem is very, very, very short. आपण सगळ्यांना ईश्वर ईश्वर माहित आहे. वेदापासून त्याचं वर्णन नेटी असं करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनाला खूप कन्फ्युजन होतो. वैज्ञानिक लोक त्याला बकवास म्हणतात. पण मला ईश्वर दिसला आहे. याच देही याचे डोळा इथे ईश्वर दिसलेला आहे. त्या ईश्वराचं दर्शन मी आपल्याला माझ्या कवितेतून करून देतो. पहा आपल्याला पटते का. कवितेचं नाव आहे गीत निसर्गाचे. स्वर्ग सुखाच्या शोधासाठी माझे मनगे उंच भरावी. वळून बघता कळून आले स्वर्ग आपल्या धरेवरी. प्रभातकाली पहा पसरली पूर्व दिशेला परमप्रभा. सहर्ष त्याचे स्वागत करण्या सज्ज झाला सर्व सभा. नवतेजाने चमकू लागली सारी जीवन सृष्टी. चैतन्याच्या दिव्य दर्शने पावन झाली दृष्टी. वनचर पक्षी मधुर स्वराने स्तवन कुणाचे करीती. हरित तृणाच्या दवबिंदू तण परमेशाला ते बघती. कळ्या उमलती सुमदे फुलती सुगंध त्याचा चोहीकडे. वृक्ष डोलती लता नाचती आनंदी आनंदगडे आनंदगडे. हा आनंदी आनंद देणारा निसर्ग हाच आपण परमेश्वर मानला तर नाही का जाणार. आता दुसरी कविता आहे ती आयोजकांच्या परवानगीने म्हणत आहे. त्या कवितेचं नाव आहे मनोसृष्टीचा विनाश. तर कविता अशी आहे. शांत शांत अतिभयान भिवविते वसुंधरा. चकोर प्राण नाशला कशास चांद हासरा. भग्न भव्य भव चाल सर्वनाश दाटला. आटली जिवंत आस हृदबिदार छाटला. नितांततेस अंत नाही कालचक्र थांबले. रोगमुक्त जरी शरीर प्राण हाय कातले. पठाल खवळ सागरा विमुक्त तांडवामुळे. कंप भूमीचा न भीती अग्निराशी काजळे. प्रकाश तिमिर दोनना अनंत शांत ऐकवे. ब्रह्मपूर्ण राहलेच शून्य मानसाचे. आणि तिसरी छोटी कविता आहे. आपण या शून्य माणसातून बाहेर येऊया. तिसरी कविता आहे मराठ्यांच्या इतिहासातील एक सुवर्ण पान. त्याच्यावर रक्ताच्या शाईने
लेख लिहिलेला आहे. ही कविता शिव कोंढाण्याचं नाव शिवभोगात कसं झालं याच्या संबंधी फक्त 8 ओळींमध्ये मी ते सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतो. कोंढाण्यावर ध्वजा फडकल्या, पाजळल्या ज्योती, गडा आला पण शिव हरपला, बदले छत्रपती. ढालीने दगा दिल्यावर छातीवरती वार घेरले, चरण जाता लढता लढता शिवचरणावर प्राण अर्पिले. तानाजीची गात श्रेष्ठता, शिवरायाचे अश्रुफुले, प्रभावशाली सुगंध त्याचा शिवगडावर सदा दरवळे. वंदन माझे या श्रद्धेला, जोडून दोन्ही कर. तानाजीचा गाती पवाडा, तानाजीचा गाती पवाडा, शिवगडाचे कणखर कंकर. जय शिवाजी, जय तानाजी, नमस्ते जी. चल माझं. Thank you, Dr. Dhadphale. That was amazing. I was going to say to everybody that Dr. Dhadphale is our vadil. He's 97 years of young age, and he's extremely active. He's a GS 1948. I was born in 46, so he was already a entry in medical school that time, and he's very active in all our GS groups. Amazing, and it's so inspirational. Thank you for all the spiritual poems that you rendered. Appreciate that. Dhanyavad, sir. Thank you. Thank you for blessing all of us. We all need your blessings to go forward in this. You've truly been inspiration for all of us. So let's go. Yes, Medical College has always been inspiring me. Thank you. Thank you. Okay, Dr. Dokwal next, please, and everybody else, please mute. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to meet this wonderful gathering and all wonderful people. तो मैं एक बहुत छोटी सी गजल है मेरी, उसका शीर्षक है इंतजार. इंतजार की कितनी इंतहा हो सकती है, ये थोड़ा मैंने बताने का प्रयास किया है. शायद मेरी बात आप तक पहुंच सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा. तो आई एम स्टार्टिंग इट नाउ. बहुत देर कर दी सनम आते आते, बहुत देर कर दी सनम आते आते, जमाना ही गुजरा बुलाते बुलाते, बहुत देर कर दी सनम आते आते. वो क्या दौर था, हाय क्या वक्त आया, वो क्या दौर था, हाय क्या वक्त आया, बहारों ने मेरे चमन को जलाया, हुआ खाक पल में मेरा आशियाना, जिसे उम्र गुजरी बसाते बसाते, बहुत देर कर दी सनम आते आते. सॉरी. नहीं कोई शिकवा न कोई शिकायत, नहीं कोई शिकवा न कोई शिकायत, शायद यही होगा दस्तूर उल्फत, बहुत कोशिशें की तुम्हें भूल जाए, खुद को भुला बैठे तुमको भुलाते, बहुत देर कर दी सनम आते आते. और लास्ट स्ट्रेंजर है इसमें. अभी भी डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स कितना मतलब ऑप्टिमिस्टिक है. निगाहों को तो अभी इतना यकीन है, निगाहों को तो अभी इतना यकीन है, ये सपना है सपना हकीकत नहीं है, किसी मोड़ पे जिंदगी के सफर में वो मिल जाएंगे एक दिन मुस्कुराते,
बहुत देर कर दी सनम आते आते। नमस्कार एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, Dr. Gopal. Please do post your poem, or maybe you already did Sure, that. sir. Yeah, maybe you already did that. And so the next was, I think it was Asha Ben. Asha Ben, and next is Dr. Yeah, Asha Ben, and then next will be Dr. Sanjay Jagtap. Okay. Good morning. I'm Asha Mehta, born and brought up in Calcutta, in New Jersey since 1980. I've never written. It was one fine day, Kalind Bhai called and said, "You can." So I've very gingerly tried to write. So please, हमारी भूल चूक सुधार के सुनिएगा, और with Kalind Bhai's blessing and encouragement, I am really taking this liberty to say something in front of all of you. You guys are all Diggaj Kavis. I'm just a baby now, but it is all due to my Guruji. So please bear with me. Zaba mili, hum zaba nahi mila. Zaba mili, hum zaba nahi mila. Gham mila, gham khwar nahi mila. Gham mila, gham khwar nahi mila. राह मिली हम राह नहीं मिला, राह मिली हम राह नहीं मिला, कदम मिले हम कदम नहीं मिला, कदम मिले हम कदम नहीं मिला, दर्द मिला दिलदार नहीं मिला, सफर मिला हम सफर नहीं मिला, जिंदगी मिली जिंदा दिली नहीं मिली, जिंदगी मिली जिंदा दिली नहीं मिली, यूं ही मिलने न मिलने की किसी का खेल खेलते खेलते, यूं ही मिलने न मिलने का खेल खेलते खेलते, जिंदगी कब ताली देकर सरक गई पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला. और there is one more four-liner, again with my Guruji's blessing. धोखा हमेशा यकीन की चादर ओढ़े ही क्यों मिलता है, धोखा हमेशा यकीन की चादर ओढ़े ही क्यों मिलता है, गद्दारी हमेशा वफादारी की ओढ़नी ओढ़े ही क्यों मिलती है, गद्दारी हमेशा वफादारी की ओढ़नी ओढ़े ही क्यों मिलती है, दुख हमेशा सुख के रास्ते से होकर ही क्यों गुजरता है, दुख हमेशा सुख के रास्ते से होकर ही क्यों गुजरता है, और दुश्मन हमेशा दोस्ती का चोला ओढ़े ही क्यों मिलता है. थैंक यू, थैंक यू. ये मेरी बहुत जिंजरली हिम्मत करके मैंने अपने गुरुजी के आशीर्वाद को एक्सेप्ट करके बोला है. प्लीज पार्डन माय मिस्टेक्स. Okay, thank you very much, Asha Ben. That was wonderful. And now Dr. Sanjay Jagtap, followed by Mahesh Shah. Dr. Jagtap first. Dr. Jagtap, is he here? I think is not available. He's not there. Okay. Yeah. I see. So Mahesh Bhai Shah, and then next, hold on one second. Let me just see who the next one is. So, Dr. Dilabar Hussain Dokwal. The next will be that. Mahesh Bhai Shah first. नमस्कार, मेरा नाम महेश शाह है और मैं पेंसिल्वेनिया यूएसए में रहता हूँ. सभी कविजनों को मेरा सादर नमस्कार. मैं अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति गुजराती में रखता हूँ. प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा. तू रात बनीने आव, હું સ્વપ્ન બની જાઉં તારી આંખોમાં. તું રાત બનીને આવ, હું સ્વપ્ન બની જાઉં તારી આંખોમાં. તું લહેરાવ પાલવ, તું લહેરાવ પાલવ, આકાશ બની સમાઉં હું તારી પાંખોમાં. આકાશ બની સમાઉં હું તારી પાંખોમાં. જ્યારે જ્યારે કલમ લઈ લખવા બેસું,
અને જો તું હોય સમીપે, જિંદગી લખાય શબ્દોમાં ને ગઝલ વણાય તારી વાતોમાં. જિંદગી લખાય શબ્દોમાં ને ગઝલ વણાય તારી વાતોમાં. નવી યાદો લખાતી જાય ને જિંદગી વંચાય મુલાકાતોમાં. જિંદગી વંચાય મુલાકાતોમાં. એકમેકની હૂંફ બની દેહ અવિરત બને શ્વાસોશ્વાસમાં. એકમેકની હૂંફ બની દેહ અવિરત બને શ્વાસોશ્વાસમાં. ફરિયાદોને સ્થાન ન હોય ને પ્રેમનો અરીસો હોય હૃદયમાં. તું મને નિહાળે ને હું મારો પડછાયો નિહાળું તારી આંખોમાં. તું મને નિહાળે ને મારો પડછાયો નિહાળું હું તારી આંખોમાં. અંગત ન હોય કંઈ પણ લાગણીઓમાં આપણી વચ્ચે. અંગત ન હોય કંઈ પણ આપણી વચ્ચે માનસ હવે તું ખોવાઈ જા સ્વપ્ન ભરેલ રાતોમાં. માનસ હવે તું પણ ખોવાઈ જા સ્વપ્ન ભરેલ રાતોમાં. તું રાત બનીને આવ હું સ્વપ્ન બની જાઉં તારી આંખોમાં. તું લહેરાવ પાલવ અને हूँ समाओ तारी आंखों में. थैंक यू. और अभी मेरे पास वक्त है, मैं 2 मिनट है यूज कर सकता हूँ, आपकी इजाजत हो तो. श्योर श्योर, प्लीज गो अहेड. ये हिंदी में है कि न जाने क्या क्या लिख जाता है बन के शायर तू. न जाने क्या क्या लिख जाता है बन के शायर तू. हर घाव पे मरहम बन के बिखर जाता है तू. दर्द का एहसास सिर्फ आंखों से बयां नहीं होता. कलम के सहारे यूं कागज पे उंडेल जाता है तू. ये शब्द भरे कलश कभी खाली क्यों नहीं होते. नम आंखों से उलेच कर कागज भिगो दिए होते. इस कदर दर्द भर के रखता है कोमल दिल में तू. इस कदर भर के दर्द रखता है कोमल दिल में तू. मुस्कुराते चेहरे के पीछे दर्द जान लेता है तू. कोई आजकल की दास्तां नहीं, ये इतिहास है. ये कोई आजकल की दास्तां नहीं, इतिहास है. जाने क्या क्या खेल खेला होगा जमाने ने मानस. मझधार में डूब कर भी मुस्कुराहट है तेरे चेहरे पे. मझधार में डूब कर भी मुस्कुराहट है तेरे चेहरे पे. किनारे बैठे तमाशाई को न जाने क्या क्या सिखा जाता है तू. नमस्कार. थैंक यू. Thank you, Mahesh Bhai, for utilizing the time very well and sharing wonderful poems. Now, not Dr. Dilwar Hussain Thakwala. Next is Dr. Renuka Bharswadkar. So, Dr. Thakwala, you here? Dilwar Hussain Thakwala. Going once, going twice. Gone, gone, gone. Dr. Renuka Bharswadkar. Please unmute yourself. Is she there? अनम्यूट किया अभी. मैं डॉक्टर रेणुका दास भारसवाडकर फ्रॉम छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र, भारत. आज ही हमारे गांव से, जो औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर था, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नाम भी छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट और छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन ऐसा हुआ है. इसका मुझे बहुत खुशी है. और मैं आपके सामने एक हिंदी में गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं. गजल हिंदी में है. शीर्षक है जल से जले दिल से धुआं निकले. ये फारसी बहर कामिल में है और इसका वजन 12112 12112 12112 12112 ऐसा इसका वजन है. तो पेश करता हूं आपके खिदमत में एक हिंदी गजल. गुनाह किसने किया
समझे, गुनाह किसने किया समझे, सजा फिर भी सुना न सके, सजा फिर भी सुना न सके, नहीं करते हया शर्मो, वफा फिर भी निभा न सके, नहीं करते हया शर्मो, वफा फिर भी निभा न सके, बंद पलके छुपा न सकी, बंद पलके छुपा न सकी, सभी बिखरे हुए सपने, बंद पलके छुपा न सकी, सभी बिखरे हुए सपने, दीवार खड़ी रही दिल में, दीवार खड़ी रही दिल में, दरार फिर भी मिटा न सके, दरार फिर भी मिटा न सके। अगला शेर है, कभी गम के पहाड़ टूटे, कभी दिल के करार टूटे, कभी गम के पहाड़ टूटे, कभी दिल के करार टूटे, रहा कितना खफा खुद से, रहा कितना खफा खुद से, हंसी फिर भी भुला न सके, हंसी फिर भी भुला न सके। अगला शेर है, फूटे मटके भरे कितने, कब तक चले टूटे नगमे, फूटे मटके भरे कितने, कब तक चले टूटे नगमे, दिले पर्दा छुपा न सके, दिले पर्दा छुपा न सके, मिला फिर भी उठा न सके। और ये आखिरी मक्ता है जिसमें मेरा तखल्लुस दास है, जल जले दिल से धुआं निकले, बना गम दास का पर्दा, जले दिल से धुआं निकले, बना गम दास का पर्दा, अदा इतनी क्षमा कितनी, अदा इतनी क्षमा कितनी, गजल फिर भी सुना न सके, गजल फिर भी सुना न सके। धन्यवाद। Thank you very much. Appreciate that. This is a mixture of a lot of. Please mute yourself. Please mute yourself. Thank you. This is a combination of all the various bhashas, and I just want to introduce something. Vishwa Gujarati Hindi, I wrote in Sanskrit. I just want to read it quickly. Gurjari mama matrubhasha. Gurjari mama matrubhasha. Hindu tu matrusvasa. Matrusvasa means mausi in Sanskrit. Hindi tu matrusvasa. Angla bhasha shikshita abhavat. I learned English. Angla bhasha shikshita abhavat. Marathi jignase aham. I want to learn Marathi. So that's my jignasa. Angla vishwe prachalita. Angla vishwe prachalita. Mama gruhe tu gurjari. I speak Gujarati at home. Marathi patitum ichhami. That is fine. But what calls me Bharatiya? Hindi Bharatiya kartavyam. What makes me Bharatiya is Hindi. So we have combination of all these people, and it's wonderful to have you all. I see Dr. Rajan Lakhe just joined. Okay, sir. Yes. So please, Dr. Lakhe, unmute yourself and present with the little invitation to you. So please unmute and begin. Thank you for just calling me and getting me for the performance. My Matrubhasha is Marathi. So I'll just have the ghazal in Marathi. Whether it is Tarannum mein hoga to chalega ya nahi? Sure. Okay. Thank you. That Vrutta in the ghazal is Trigiri Vrutta, which is having the 16 matra and the 20 matras.
and the वृत्त is त्रुगिरी. एक शेर है भाषा मराठी. शेर पहिला शेर. पाहते काग माझ्याकडे सारखी, पाहते काग माझ्याकडे सारखी, ही गुलाबी नजर खेचते सारखी. पाहते काग माझ्याकडे सारखी, पाहते काग माझ्याकडे सारखी, ही गुलाबी नजर खेचते सारखी. पाहते काग माझ्याकडे सारखी, ही गुलाबी नजर खेचते सारखी. बाग ही बहरली फूल फुलले मनी, उमलणारी कळी भासते सारखी. तिसरा शेर. सूर हे बासरीतून यावे जसे, सूर हे बासरीतून यावे जसे, वेड लागे अशी बोलते सारखी. जीव हा भाळला सारखा ऐकतो, जीव हा भाळला सारखा ऐकतो. टक टक अशी घडी वाजते सारखी, टक टक अशी घडी वाजते सारखी. जवळ तू भासते दूर आहे तरी, जवळ तू भासते दूर आहे तरी, काळजीने हमी राहते सारखी, काळजीने हमी राहते सारखी. गंध गंध ग हवेत मन वेडावते, गंध गंध ग हवेत मन वेडावते. पारिजातक जशी शोभते सारखी. नयन हे पाहती फिरकती पाऊले, नयन हे पाहती फिरकती पाहुले. बाहुली ही तू अशी डोलते सारखी, बाहुली तू अशी डोलते सारखी. तखल्लुस शेवटचा. गोड कायत गोड का गोडवा कायतो राजनच पाहतो, गोडवा कायतो राजनच पाहतो. माळताना फुले लाजते सारखी, माळताना फुले लाजते सारखी. पाहते कागमा झाकडे सारखी, ही गुलाबी नजर खेचते सारखी. धन्यवाद. 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 Excellent. Please get Sanjay Jagtap is there. on to CKK, please. Okay, thank you very much. CKK is Chalo Kavita Kariye. We have a WhatsApp group, and we would love to have these on so that we can enjoy, at our leisure as well. Next is Daksha Mull, and to follow that would be Kedar Gopal Dhadphale. Dr. Sanjay Jagtap is there. Okay, sir. Okay, let's go. Dr. Sanjay Jagtap. Okay. Please unmute yourself, Dr. Jagtap. नमस्ते. माझी कविता सादर करतोय. कवितेचं नाव आहे राष्ट्रभाषा हिंदी. अभी अभी राष्ट्रभाषा हिंदी दिन 15 सितंबर को हुआ है. इसी के लक्ष्य में मैं संजय जगताप, सचिव महाराष्ट्र साहित्य परिषद की ग्रीनचोट कविता पेश करता हूँ. राष्ट्रभाषा हिंदी. राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी हिंदुस्तान की शान है, गर्व हमें है इस भाषा पर, ये सबका अभिमान है. हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम, हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम. आजादी के बाद यहाँ हो संस्कारों की टोलियां, यह मत बोलो कभी किसने खाई कितनी गोलियां. अक्षर अक्षर बने हैं मोती, प्रेमचंद का गोदान है, गर्व हमें है इस भाषा पर, ये सबका अभिमान है.
हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम, हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम। तुलसी हो जिसके आंगन में सूरों के जो दास हो, कालिदास हो जिस घर में वो शाकुंतल जो पास हो, कबीर जी है इसके रक्षक हर दोहा जिसकी जान है, गर्व हमें है इस भाषा पर ये सबका अभिमान है। हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम। 14 सितंबर हिंदी दिन जो आज भी हमें याद हो, अंग्रेजी बोलो या मराठी हिंदी पे ना फिर याद हो, भाषाएं हो बहनों जैसी हिंदी की यह आन है, गर्व हमें है इस भाषा पर ये सबका अभिमान है। हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम। राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी हिंदुस्तान की शान है, गर्व हमें है इस भाषा पर ये सबका अभिमान है। हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम। नई सदी के मानव सुन लो तुमको सफल होना है, हिंदी का यह झंडा तुमको समुंदर पार लगाना है, माता है यह भारत की जिसका नाम बलिदान है, गर्व हमें है इस भाषा पर ये सबका अभिमान है। हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम, हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम। पराया धन पराई नारी ये न हमारी आस हो, संस्कृति की हम जोली बस हिंदी हमारे पास हो, पराया धन पराई नारी ये न हमारी आस हो, संस्कृति की हम जोली बस हिंदी हमारे पास हो, यही हमारी असली दौलत यही हमारी शान है, यही हमारी असली दौलत यही हमारी शान है, गर्व हमें है इस भाषा पर ये सबका अभिमान है। हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम। राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे हिंदुस्तान की शान है, गर्व हमें है इस भाषा पर ये सबका अभिमान है। हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम, हिंदी बोलो तुम, हिंदी सीखो तुम। धन्यवाद। Wonderful. Make sure we post this. Excellent. My little Sanskrit thing was appropriate. Now then it looks like we are becoming Bharatiya, we're becoming Hindi. हिंदी से बोलने हिंदी बोलेंगे तो अच्छा होगा। बहुत 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 बढ़िया। अब बारी आती है, इसकी है। मैंने अनाउंस किया था अभी क्या? जी दक्षा मल, बाद में केदार गढ़पले। जी He's ready, please. Okay. Hi, this is Daksha, and with Dr. Kalind Bakshi encouraging me to write is how I am writing, and now I make the effort to write in Gujarati. So this is how my thought processes go, and if I can, I will do 2 poems. The first one is a lighter poem, and it's going to be in Gujarati, okay? So here it goes. જીવનની આ સંધ્યા કાળે રસપ્રદ કામ હું શોધું, સૂર્ય નમસ્કાર ભૂમિ વંદન ધ્યાન ધરું રોજિંદુ, રસોઈ પાણી કપડા વાસણ ફિટનેસ રૂટીન ફાવે, વોટ્સએપ ફેસબુક યુટ્યુબ પોડકાસ્ટ બપોર પડે નિરાતે, સુડોકુ સ્ક્રેબલ વર્ડલ પઝલ કોફી સાથે ગમતા, ટીવી મૂવી બુક્સ એન્ડ ગોસિપ સમી સાંજે કરતા, मनोमंथन ने सेल्फ डायलॉग रातना मारा साथी, कोजी घरनी 4 दीवाल में सुख शांति समाती. As a result of this, in my 7th decade of life, I thought of this, and this came from reading an English poem on what if I am not there tomorrow. So this is in Gujarati. આવતીકાલની સવાર કદાચ જો મારા વગરની હોય તો ચાંદ સૂરજ ને તારા થોડા રજા લેતા હોય, રડિયાળ નથી અટકતી તો પણ તારી દુનિયા થોભી, કેમ રેવાય ઘર ખાવા જાય ને ખાલી પોએ દજાય, રડતી કકરતી ધ્રુસકા ભરતી હું નહીં જોવા હોઈશ,
યમરાજાનું તેડું આવ્યું, તૈયારી કઈ નહોતી. પુણ્યની એકે પોટલીને બાંધી, પાપની છે આ યાદી. ભૂલ કરી વેડફાયું આયખું, મૂર્ખામી કરી કેવી. પાડ છે તારા ઉદાર દિલનો, સાથ મારો નિભાવી. ખટમીઠા આ લગ્ન જીવનમાં ને કયું ઘણું તને ન કહેવાનું, ક્ષમા આપ તું મુજને. રડી લેવા દે તું મને આજે, નિરાંતનો શ્વાસ તું લઈને. જય ભગવાન અને કરીશ હું અરજી, જીવન તારું સુધરે. આવતે જન્મે તું જ મને મળે, અખૂટ સુખ તને વરદે. નમસ્કાર. Okay, wonderful. Next one is Kedar Gopal, and following that, Ravindra Sonawane. Kedar Bhai, Kedar Gopal, please. Namaste. My name is Kedar Gopal Dhadphale. I'm Dr. Dhadphale's, Dr. G.M. Dhadphale's son, and I've written a poetry and I've composed it also. So that for all of you, I want to sing that poetry. So I'll start now. It's written in Hindi. तकल्लुफ़ी के लिए माफी चाहता हूँ, कभी ना जुदा होने की सजा चाहता हूँ. तकल्लुफ़ी के लिए माफी चाहता हूँ. गुल तो होंगे गुलशन में बहुत, कलियां भी होंगी कितनी. गुल तो होंगे गुलशन में बहुत, कलियां भी होंगी कितनी. पर मैंने तुमको चुन लिया, पर मैंने तुमको चुन लिया. उनसे माफी मैं चाहता हूँ, तकल्लुफ़ के लिए माफी चाहता हूँ. दोस्त होंगे तुम्हारे कितने, आशिक भी होंगे कितने. दोस्त होंगे तुम्हारे कितने, आशिक भी होंगे कितने. नाराज हो जाएंगे वो सब, नाराज हो जाएंगे वो सब. उनसे माफी मैं चाहता हूँ, तकल्लुफ़ के लिए माफी चाहता हूँ. खुदा भी होगा तुम पे फिदा, इस बात का है गुमा भी. खुदा भी होगा तुम पे फिदा, इस बात का है गुमा भी. तेरा अगर इकरार हो, हाँ तेरा अगर इकरार हो, उससे माफी मैं चाहता हूँ, तकल्लुफ़ के लिए माफी चाहता हूँ. कभी ना जुदा होने की सजा चाहता हूँ, तकल्लुफ़ के लिए माफी चाहता हूँ. Thank you. Thank you very much. Appreciate that again. Please post these poems, and appreciate such a wonderful contribution. I think the next one we have
is Ravindra Sonawane, then Shaila Munshaw. Good evening, everybody. I am going to present one Hindi song for all of you from old movie. That song is sung by Mukesh. So please, I am going to present. Okay. Are you getting me? Yes. Okay. Okay. Just a moment. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। चुप चुप तमाशा देखे बाहरे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तू खाए प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको काहे को भीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। Thank you everybody. Excellent. Almost looks like there's so many musicians here that we have to do a musical program another time. It's excellent. It gives a lot of encouragement to everybody. One request I do have, anybody who does want the recording, please make sure you put in your email address in the chat box. So I don't know who the next one was. Did I announce that already? Shaila Munshaw, and to follow by Dr. Shobha Wagle. Shaila Munshaw. Hello everyone. Shaila Munshaw from Vadodara, Gujarat. હું એક ગઝલ ગુજરાતીમાં રજૂ કરીશ જેનું શીર્ષક છે જુગલબંધી, અને આ મારી ગઝલને સ્વરાંકન પણ કરવામાં આવી છે. સુગંધી વાયરા સાથે જુગલબંધી કરી છે મેં, સુગંધી વાયરા સાથે જુગલબંધી કરી છે મેં, મુલાયમ મોગરા સાથે જુગલબંધી કરી છે મેં, મુસીબત આવતી ઝીલી ભરોસો જાત પર રાખી, કરમના દાયરા સાથે જુગલબંધી કરી છે મેં, કરીના હારની પરવા પડેના દાવ 64ના, રમતના મોહરા સાથે જુગલબંધી કરી છે મેં, બતાવે પીઠ કાયર છોડતા રણ મોં છુપાવીને, બતાવે પીઠ કાયર છોડતા રણ મોં છુપાવીને, રણાંગણ મોખરા સાથે જુગલબંધી કરી છે મેં, અને છેલ્લે કઠણ છે છોડવું આંગણ, કઠણ છે છોડવું આંગણ, વિતાવી જિંદગી આખી, પિયરના ઉંબરા સાથે જુગલબંધી કરી છે મેં, પિયરના ઉંબરા સાથે જુગલબંધી કરી છે મેં. અને હજી સમય છે એટલે હું હિન્દી મારી કવિતા રજૂ કરવા માંગુ છું. હમણાં જ રક્ષાબંધન ગઈ અને પહેલા ભાઈ નતો મારે, જ્યારે એની વેદના અને પછી ભાઈ આવ્યો, એ વાત મેં મારી हिंदी कविताમાં રજૂ કરી છે. राखी का त्योहार जब भी आता है मन हरदम खुशियों से भर जाता है, राखी का त्योहार जब भी आता है मन खुशियों से हरदम भर जाता है, बात मेरे बचपन की यूं ही आई जहन में, चुप छुप कर रोती थी दर्द छिपाए मन में, बचपन की तड़प हर बार उभर आती थी, बचपन की तड़प हर बार उभर आती थी, देख सबके भैया आह निकल जाती थी, माँ जब सजाती थी थाली दिए और राखी से, चेहरे पर मेरे छलक उठते आंसू उदासी से, पर दुख ने जल्द ही किया किनारा, पर दुख ने जल्द ही किया किनारा, जब द्वार मेरे खड़ा था भैया दुलारा, बैठा था वह माँ की परम सहेली का, देख आंसू मेरे खटखटाया द्वार हवेली का, बंधवाई राखी मुझसे बनके भैया मेरे, निभाया फर्ज भाई का
जीवन भर संग मेरे। तब से राखी का त्योहार जब भी आता है, मन हरदम ही खुशियों से भर जाता है। मन हरदम ही खुशियों से भर जाता है। नमस्ते। Thank you very much, Shaila Ben. That was wonderful. Again, please put your poems there. And then the next one I did announce is Dr. Shobha Wagle. Then following that, Dr. Nitin Upadhyay. Namaskar, myself Shobha Wagle. I'm not a doctor. I'm a simple ordinary teacher, secondary school. Yes. I am from Mumbai, that is Maharashtra, Bharat. I'm going to narrate my ghazal, the first matla and two set, and then the real ghazal of 7 set. So starting in, that is a Prasunangi. Please mute. Can I start now, sir? Yeah, you can start. Yeah, thank you. Prasunangebu, that this poem is, this ghazal is especially for the what I am, what I want to be. In that I said in this way. What I am at present, I'm doing. The matla, कुणाच्या फालतू धंद्यात नसते मी. कुणाच्या फालतू धंद्यात नसते मी. तसेही फारसे व्यापात नसते. तसेही फारसे व्यापात नसते. मनाला मी किती सांगू कसे सांगू. मनाला मी किती सांगू कसे सांगू. मनाच्या मालकी विश्वात नसते मी. मनाच्या मालकी विश्वात नसते मी. व्यथेची कारणे मी जाणते आता. व्यथेची कारणे मी जाणते आता. व्यथेच्या आणखी छंदात नसते मी. व्यथेच्या आणखी छंदात नसते मी. Now I'm going to say my ghazal, that is Pramila Vritti. Bola. This also specially for at the age, we are aged people now, and how to behave with young generation, that I have said in this way. That is the title is Bola. मुलांशी फार सांभाळून बोला. मुलांशी फार सांभाळून बोला. कधी केव्हा कसे ठरवून बोला. कधी केव्हा कसे ठरवून बोला. खरे खोटे जरा जाणून घ्यावे. खरे खोटे जरा जाणून घ्यावे. खऱ्यासाठी सदा भांडून बोला. खऱ्यासाठी सदा भांडून बोला. असत्यास जरी वाचात नसते. असत्यास जरी वाचात नसते. जगी खोटेपणा टाळून बोला. जगी खोटेपणा टाळून बोला. उदरभरणी किती कष्टी म्हणावी. उदरभरणी किती कष्टी म्हणावं. महागाई आता सोडून बोला. महागाई आता सोडून बोला. भला नेता म्हणून निवडलेला. भला नेता म्हणून निवडलेला. तरी सत्यास मग वगळून बोला. तरी मग सत्यास वगळून बोला. नको परवा करू आता कुणाची. नको परवा करू आता कुणाची. खरे सगळे आता पटवून बोला. खरे सगळे आता पटवून बोला. शेवटचं असे, जगासाठी करू आपण हिताचे. जगासाठी करू आपण हिताचे. कसे साधायचे सांगून बोला. कसे साधायचे सांगून बोला. मुलांशी फार सांभाळून बोला. कधी केव्हा कसे ठरवून बोला. Thank you very much, sir. I thank that Milind Sejwaji and Nisargachi. That is very nice. You give me opportunity to say this way. Thank you very so much. Thank you. Very welcome for presenting, and really appreciate that. Dr. Nitin Upadhyay. We are doing very good in timing. Excellent. Thank you, everyone, for being so prompt and nice and really up on time. Appreciate that. Dr. Nitin Upadhyay. नमस्कार, मी नितीन उपाध्याय. Smita Dhuv next. I'm sorry. Smita Dhuv will be next. Dr. Nitin, go ahead.
नमस्कार. मी डॉक्टर नितीन उपाध्याय दुबईहून. सर्वात अगोदर मी श्री कालिंद साहेबांचं अभिवादन करना चाहतो की ते इतक्या छान पद्धतीने पूर्ण कार्यक्रम अरेंज करतात. ते कल्पना दिदींचं त्यांनी हा प्रोग्राम अरेंज केला आणि डॉक्टर मिलिंद यांचं 2 शेर आणि मग गझल. सुनो ध्यान से क्या नदी कह रही है, सुनो ध्यान से क्या नदी कह रही है, रहा साफ जल तो रवानी रहेगी. चलो आज कह दूं गजल एक तुम पे, चलो आज कह दूं गजल एक तुम पे, यही तो हमारी निशानी रहेगी. अब मैं अपनी गजल पे आता हूँ. छोटी बहर की गजल है ये. मानता हूं जबर से क्या होगा, मानता हूं जबर से क्या होगा, पर बताओ सबर से क्या होगा. क्यों सिखाते हो बोलना सच ही, क्यों सिखाते हो बोलना सच ही, इस अधूरे हुनर से क्या होगा. राही चलने को ही नाराजी हो, राही चलने को ही नाराजी हो, बस एक राहबर से क्या होगा. कभी तो पास आके मिल भी लो, कभी तो पास आके मिल भी लो, खैरियत की खबर से क्या होगा. आसमां चांद से ये कहता है, आसमां चांद से ये कहता है, रुको भी रात भर से क्या होगा. मिला है दोस्तों से इतना की, मिला है दोस्तों से इतना की, अब तो असली जहर से क्या होगा. और इसका अंतिम शेर है. मैं कोई तकल्लुफ अपना उपनाम नहीं प्रयोग करता. मैं गिरूंगा तो उठ ही जाऊंगा, मैं गिरूंगा तो उठ ही जाऊंगा, गिरा जो तू नजर से क्या होगा. गिरा जो तू नजर से क्या होगा, मानता हूं जबर से क्या होगा, पर बताओ सबर से क्या होगा. धन्यवाद. Excellent. A way to put it on CKK, please do that. We'll talk more about the CKK. We are all invited to join, and a very active group. We play ping pong of the Kavita back and forth. We do a lot of that, and so we really enjoy that. If people can join that. So I think I have the next one announced already. Smita Dhuv, and then following that will be Charudat G. Mahesh. Smita. Unmute yourself, please. Hello, friends. Thank you, Kalind bhai, my brother. I'm privileged to have joined this group. I mean, every poem is so inspiring and different thought processes. So very happy. I cannot write. I mean, some garbad with my typing, but really all poems are very excellent. So one first poem I'll be reading out will be in Gujarati, and other one is in English, if time permits. બધું ક્યાં કેમેરામાં કેદ થાય છે. When we click a photograph, does everything is captured? No. I mean, I shouldn't be answering, but what the poem is giving the answer. બધું ક્યાં કેમેરામાં કેદ થાય છે. ઝાડ પર લટકેલી અસંખ્ય વાગોળ અને ચાંચમાં ચણ લઈને ઉડતી કાબર, બિલાડીનું ભૂરકીને બોલેલું મ્યાઉ ને કૂતરાની પૂંછડી થતી પટપટ, બધું ક્યાં કેમેરામાં કેદ થાય છે. જંગલમાં વાઘની પડતી ત્રાડ ને હરણાની ઝડપી હરણફાળ, જળમાં મગરમચ્છની જડબાફાડ, ગજરાદ ચાલે મદમસ્ત ચાલ, બધું ક્યાં કેમેરામાં કેદ થાય છે. શેક હેન્ડ કરતા હાથની ગરમાહટ ને આંખમાંથી ટપકેલું છેલ્લું આંસુ, પગે લાગતા મળતા સૌના આશીષ ને મમતાથી માએ કરેલું ચુંબન, બધું ક્યાં કેમેરામાં કેદ થાય છે. કન્વેયર બેલ્ટનો લાગતો ધક્કો ને પરદેશમાં મળેલો ઘરનો સંદેશો, નવા દેશમાં મંડાતા નવા પગરણ ને એકલા ઉજવાતી નિત નવી મોસમ, બધું ક્યાં કેમેરામાં કેદ થાય છે. બધું ક્યાં કેમેરા.
next poem is on travel. It is about self, a little bit, when we think within. So when you travel, are you the same person? You ask yourself. Travel, they checked me in, security done, and was asked, have you got anything that you should not carry? Which got me thinking, and I realized that in fact I had forgotten to carry my own self with me. It was a mistake, it was a blunder not to carry myself with me. What will I do when I see the mountains, rivers, and nature's beauty? How will I feel the chirrups of birds, roars of lions, and a dolphin's jump? If there is no me, gone is the sensitivity and power to appreciate the world. Returned then I from the airport, running back home for my me ASAP. And lo and behold, here was myself waiting for me. I apologized, tears rolling from my eyes. She smiled. It's okay. I knew you will come. Now, whenever I travel next, I make sure to carry myself with me, like a brooch, like a passport, like a life jacket that I cannot do without. Thank you. Very good. Thank you very much. Next is Meherji, and then after that, let me see, Kalpana Peters, Kalpana ji, and then Dr. Milind Sejwal. So first will be Chandraprakash. Is he there? Milindji, do you know if he's there? Meherji is not seen. Okay. Yeah. So let's go to Kalpana then. Kalpana Peters. Kalpana ji. Okay. Hello, everyone. I am Kalpana Savikant from Vadodara, Gujarat. और आज भी मैं एक मेरी हिंदी कविता पढ़ूंगी. शीर्षक है कोहरा के उस पार. कोहरा के उस पार. शाम ढल रही है, जाड़े का है मौसम. धीरे धीरे छा रही है कोहरा की चादर. अपनी जीवन शाम में धुंधली सी आंखों से देखती हूँ उस पार बहुत सी तस्वीरें. कोई दे रही अग्नि परीक्षा, कोई बच रही चीर हरण से. रात बढ़ती गई, कोहरा हुआ और घना. हर एक सदियों से दोहरा रही यही दास्तां. कितनी कड़ियां आज भी जुड़ती गई श्रृंखला में वहीं. मन चाहा बैठाया ऊपर देवी का रूप देकर. कभी उठाया कभी पटका, फिर उठाया फिर पटका. लहू लुहान तन मन को लेकर फिर से उसने जिम्मा निभाया. कहाँ है नारी शक्ति के देवता, नकाब पहने छिपे हैं सब. किसकी है ये साजिश, नारी की पैदाइश. हजारों सवाल से परेशान करती हूँ कल्पना, कब हो सवेरा. लो देखो सूरज की गर्म बाहों में धुंध पिघलने लगी. तस्वीर वो धुंधली थी अब साफ नजर आने लगी. कहीं ये मैं तो नहीं, घूल कर अपनी तस्वीर में बस चलती रही. मैं चलती रही कोहरा के उस पार. शुक्रिया. Very good. Thank you very much. Excellent.
The next one. Is there time? No, Kalind it's 1 minute. Okay, then next time maybe. Dr. Milind Sejwal next, and Kalpana Nayak will be followed by them. Yeah. Thanks. Am I audible? Yes, sir. Yeah. First of all, thank you, Kalind Bhai, for conducting this program, Kavya Ghazal Sammelan, in an excellent way. Very disciplined and very absorbing. Like, you don't feel like leaving your chair, and that credit goes to Kalind Bhai. So, silent clap for Kalind Bhai by all of us. मित्रों, मैं इस ग्रुप से चालो कविता करिए, इस ग्रुप से पिछले 8 महीने से जुड़ा हुआ हूं, और कालिंद भाई का बहुत प्यारा सा आवाज मुझे मिला, और मैं समझता हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश चारों भाषा में मैं कविता कर सकूं, अपने साजिंदों के साथ, अपने कलीग्स के साथ में शेयर कर सकूं। तो आज मैं हिंदी गजल पेश कर रहा हूं। पिछले कुछ महीनों में मैंने मदिरा पे मराठी, गुजराती और हिंदी में काफी गजलें लिखी हैं, तो उनमें से ही एक गजल पेश कर रहा हूं। आशा है कि आप लोगों को पसंद आए। चमन में खिला हंसी सा एक गुलाब तुम हो, चमन में खिला हंसी सा एक गुलाब तुम हो, प्याले में छलकती सुहानी शराब तुम हो, प्याले में छलकती सुहानी शराब तुम हो, चमन में खिला हंसी सा एक गुलाब तुम हो। अगला शेर पेश करता हूं। तारीफ करूं क्या तेरी मैं महबूबा, तारीफ तेरी क्या करूं मैं ए महबूबा, कली की महक नशाए चमन शबाब तुम हो, कली की महक नशाए चमन शबाब तुम हो, प्याले में छलकती सुहानी शराब तुम हो। वैसे तो हम सभी पीते हैं छुपके छुपके, वैसे तो हम सभी पीते हैं छुपके छुपके, वाइजों के वादों का अब नकाब तुम हो, वाइजों के वादों का अब नकाब तुम हो। वाइज यानी जो इंटेलिजेंट पीपल और दोज हु फील दे आर वेरी सुपीरियर। सो वाइजों के वादों का अब नकाब तुम हो, प्याले में छलकती सुहानी शराब तुम हो। क्यों मुझे लगता है कि तुम मेरी हो, क्यों मुझे लगता है कि तुम मेरी हो, हसीन सपनों की मासूम सी किताब तुम हो, हसीन सपनों की मासूम सी किताब तुम हो, प्याले में छलकती सुहानी शराब तुम हो। मक्ता पेश करता हूं। मिलिंद तूने आज पी रखी है थोड़ी ज्यादा, मिलिंद तूने आज पी रखी है थोड़ी ज्यादा, बेवफा जानू इस सवाल का जवाब तुम हो, बेवफा जानू इस सवाल का जवाब तुम हो, प्याले में छलकती सुहानी शराब तुम हो, चमन में खिला हंसी सा गुलाब तुम हो, प्याले में छलकती सुहानी शराब तुम। धन्यवाद। Excellent. Yeah, Kalpana Ben Nayak, and then followed by, let me see, 1 second. Okay, let me just refer my. Hello, Badani Samraj, can everyone hear me? Yeah. Kalpana Ben Nayak is followed by, 1 second. Wursh Bashayan, and then Kalpana Gaure.
So go ahead, Vinayak. As everyone before me said, I have started writing only because Pannaben and Kalindbai encouraged me, never written before. And I'm the only one from Australia. So now the time is sort of 11:30 at night. I'll present one poetry in Gujarati. શ્રાવણ મહિનાનો વર્ણન છે. પહેલા લખેલી છે આ કવિતા. સંધ્યાના પાલવમાં છુપાયા વાદળ અને લુપ્ત થયો પ્રકાશ. સંધ્યાના પાલવમાં છુપાયા વાદળ લુપ્ત થયો પ્રકાશ. ઘનઘોર ઘટામાં સંતાયો સૂરજ ને કાળું થયું આકાશ. આવ્યો સંગે શીતળ સમીર સુસવાટા ભરતો ગજબ. આવ્યો સંગે શીતળ સમીર સુસવાટા ભરતો અજબ. શાંત દરિયોએ ચડ્યો મસ્તીએ ઘૂઘવતો ઘણો ગજબ. વૃક્ષોની ડાળીઓ હાલે ને ડોલે ને પરણો ખંજરી વગાડે. ભીની ભીની માટીની મહેક સદા મૃદુ લાગણી જગાડે. રીમઝીમ રીમઝીમ મેઘ રાજાએ પણ આપ્યો સુંદર તાલ. ધીમે ધીમે તીવ્ર થયું એ ગાન ને વરસાદ પડે મુશળધાર. ગગનના તાંડવને જાણે સાથ આપતી ચમકી દામિની. ગગનના તાંડવને જાણે સાથ આપતી ચમકી દામિની. દિલને દઝાડતી અને રાખને છંછેડતી મેઘરાજાની એ સંગીની. હૈયું પણ ઘૂમે છે હૈયું પણ ઘૂમે વેદનાના વમળમાં. યાદોથી ભીંજાય છે મારી યાત્રી. ભીંજાય છે મારી રાત્રિ. કેમ કરી વ્યક્ત કરું દ્વિધામાં ક્યાં છુપાઈ છે એ કવિયત્રી. આ સંધ્યાના વરસાદમાં નું વર્ણન છે. શ્રાવણ મહિનાની એક સંધ્યાનું વર્ણન છે. થોડો સમય છે કલિનભાઈ? 1.5 minutes. Oh, okay. આવો ખોલું છું દ્વાર મારા દિલના મહેલના. ઘણા છે એમાં ખંડ વિવિધ અનુભવના. દરેક ખંડે છે સમય સજાવ્યા સુંદર ગોખલા. એ નાના ગોખલા છે મીઠી યાદોથી રંગાયેલા. દરેક ખંડે છે એક ઝરૂખો ખાસ. જ્યાં સંભળાય છે કરુણ સુર શિવરંજનીના. બંધનોથી બંધાયેલા ને સંબંધોથી ખરડાયેલા ભોયરાઓ પણ રચ્યા છે સમયે દર્દના. જરા ધીરે પગલે ચાલજો, સૂતેલા દર્દને ના જગાડજો. દર્દના અંગાર પરની રાખના થરને ના છંછેડશો. સુખ દુઃખ રમતા રાસ મારા મહેલના આંગણમાં. હવે માત્ર એક જ છે પ્રયાસ, સ્થિત પ્રજ્ઞાતા આવે આ પ્રાંગણમાં. આવો ખોલું છું દ્વાર મારા દિલના મહેલના. Thank you very much. Excellent. Wonderful. So now appreciate that. Appreciate very much your timeliness. I think I already announced before, but Mr. Nushaba Sham and then Kalpana Bengawe. Nushaba Shayan. Yes, Nurusaba Shayan. Good evening, everyone, and thank you so much for giving me this opportunity to be here and talk to everyone. And I will present a ghazal. I will not say it's in Urdu or it's in Hindi. I will say it is in Hindustani because the language which we use in our daily talk so that it is understandable by all. And इसको सुनने का ही मजा है. तो जो इसमें लफ्जों का तालमेल बिठाया है, आप लोग से गुजारिश है कि आप उस पर ध्यान दें, उस पर गौर करें, क्योंकि ये पढ़ने से ज्यादा इस गजल को सुनने का मजा है. शुरू करती हूँ, दुआएं से नवाजिएगा. क्या कहूँ जो तेरा हाल है, क्या कहूँ जो तेरा हाल है, वही मेरा भी हाल है.
क्या कहूँ जो तेरा हाल है वही मेरा भी हाल है, सच कहूँ तो तेरा मेरा हाल बेहाल है। सच कहूँ तो तेरा मेरा हाल बेहाल है। क्या कहूँ जो तेरा हाल है वही मेरा भी हाल है, सच कहूँ तो तेरा मेरा हाल बेहाल है। तेरे ख्याल का ख्याल, तेरे ख्याल का ख्याल अब तक है मेरे ख्याल में। तेरे ख्याल का ख्याल अब तक है मेरे ख्याल में। क्यों ना हो आखिर, क्यों ना हो आखिर, बेशकीमती तेरा ख्याल है। क्यों ना हो आखिर, बेशकीमती तेरा ख्याल है। और अगला शेर है इसी तरीके से। तेरे हर एक सवाल के जवाब में एक सवाल था। तेरे हर एक सवाल के जवाब में एक सवाल था। अब है एक खामोशी, अब है एक खामोशी, न जवाब है न सवाल है। तेरे हर एक सवाल के जवाब में एक सवाल था। अब है एक खामोशी, न जवाब है न सवाल है। तेरे वस्ल का जो साल था वो साल बेमिसाल था। तेरे वस्ल का जो साल था वो साल बेमिसाल था। अब तो तेरी तलाश में गुजर रहा हर साल है। अब तो तेरी तलाश में गुजर रहा हर साल है। और इस गजल का आखिरी शेर पेश करती हूँ। वक्त के परे, वक्त के परे तेरा ये जमाल क्या कमाल है। जमाल मीन्स खूबसूरती। वक्त के परे तेरा ये जमाल क्या कमाल है। ये तेरा जमाल है या मेरी नजर का कमाल है। ये तेरा जमाल है या मेरी नजर का कमाल है। थैंक यू सो मच। आप लोगों से सुना, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एंड आपसे बहुत बढ़िया मैडम। आपके हस्बैंड डॉक्टर दिलावर जी आए हैं क्या? वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, मैं उनको फिर से फोन करके बताती हूँ ज्वाइन करने का। वो हॉस्पिटल में है नहीं मेरे साथ, नहीं तो। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। wonderful, excellent. Is there a way to retrieve these poems, Milind Bhai? Please do it, okay? Although it's recorded here, it will be good. Kalpana Ben, Gabriel, and then Archana Chaya, if she's there. If not, then we go to Vibhavri Ben. Vibhavri next. So go ahead, Kalpana Ben. जी, बहुत बहुत नमस्ते और शुक्रिया बहुत बहुत कलिंद जी। ये आपकी मेहरबानी है जो आपने हम पे इतना भरोसा किया। और बहुत अच्छे आपने हमें बात की है कि हमें मौका दिया है इतने असवीरों के सामने पेश करने के लिए। मैं आपके सामने एक हिंदी रचना पेश करूंगी, तरन्नुम में। तुम्हारे पास मेरा दिल, तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल भरी महफिल। तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल भरी महफिल। निगाहों का तरस जाना, कहाँ काबू में मेरा दिल। तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल भरी महफिल। उमंगों का तरंगों का, उमंगों का तरंगों का, बड़ा ये मसला दिल का। उमंगों का तरंगों का, बड़ा ये मसला दिल का। रहे ना सांस भी अपनी, कहाँ काबू में मेरा दिल। तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल भरी महफिल। धड़कता है फड़कता है, धड़कता है फड़कता है, बने पिंजरे की ये दौलत। धड़कता है फड़कता है, बने पिंजरे की ये दौलत। इशारों पे ये चलता है, कहाँ काबू में मेरा दिल।
तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल भरी महफिल। खुले जो राज ये दिल के, खुले जो राज ये दिल के, बड़े सुर्खी ये गालों की। खुले जो राज ये दिल के, बड़ी सुर्खी ये गालों की। लबों पर बात है कोई, कहाँ काबू में मेरा दिल। तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल बड़ी महफिल। इनायत भी शिकायत भी, इनायत भी शिकायत भी, मोहब्बत भी अदावत भी। इनायत भी शिकायत भी, मोहब्बत भी अदावत भी। बड़ा रंगीन मौसम है, कहाँ काबू में मेरा दिल। तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल बड़ी महफिल। आखिरी पेश करती हूँ। खुदाया आज हो ऐसा, खुदाया आज हो ऐसा, न देखो तुम मेरा मुखड़ा। खुदाया आज हो ऐसा, न देखो तुम मेरा मुखड़ा। वो चंदा भी ये कहता है, वो चंदा भी ये कहता है, कहाँ काबू में मेरा दिल। तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल भरी महफिल। निगाहों का तरस जाना, कहाँ काबू में मेरा दिल। तुम्हारे पास मेरा दिल, बड़ी मुश्किल बड़ी महफिल। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. That was excellent Taranum as well. So if Archana Ben is, I don't see her. If Archana Chaya is there, okay, we move on to Vibhavri Bandhavkar. Vibhavri Ben hai? मेरे ख्याल से Vibhavri Ben नहीं आई है. Dr. हाँ जी, नमस्कार Vibhavri जी। ji was there. नमस्कार जी। Okay, go ahead. Yeah. My name is विभावरी बांधवकर। मैं थाने महाराष्ट्र भारत से हूँ। आज मैं आपके सामने डॉक्टर मिलिंद शेजवाल जी की गजल गाने की कोशिश कर रही हूँ। ये कैसी प्यास है बुझती नहीं, ये कैसी शाम है ढलती नहीं, ये कैसी प्यास है बुझती नहीं। जिंदगी से मांगे ठंडी हवा के झोंके, जिंदगी से मांगे ठंडी हवा के झोंके, ये कैसी आग है बुझती नहीं, ये कैसी शाम है ढलती नहीं। सारी जिंदगी सीधे रास्ते चले आए, सारी जिंदगी सीधे रास्ते
चले आए। ये कैसी राह है मुड़ती नहीं, ये कैसी शाम है ढलती नहीं, ये कैसी प्यास है बुझती नहीं। बस आखिर अब रोशनी दिखाना, बस आखिर अब रोशनी 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 रोशनी, बस आखिर अब रोशनी दिखाना। ये कैसी रात है कटती नहीं, मिलन आखिर का जलना है बाकी, मिलन आखिर का जलना जलना जलना, मिलन आखिर का जलना है बाकी। ये कैसी नींद है खुलती नहीं, ये कैसी शाम है ढलती नहीं, ये कैसी प्यास है बुझती नहीं। धन्यवाद। What a composition and what a singing. Thank you. Appreciate it very much, Vivariji. We have heard you. Milinji has shared a few times, but it was wonderful to see you and wonderful to hear. And we want to look forward to hearing more from both of you. Excellent. Enjoyed it very much. Let's see here. Dr. Darapwar, Shrikant Darapwar, and then Kshama Desai. Shrikant, Shrikant ji hai? Are you there? I entered him, I know that. I did enter him. Should be here. Shrikant, are you there? He did come in, I know that. Okay. If not, let's go to Somen. We are doing excellent timing, believe it or not, for one reason or the other. We're finishing. Hello. Yes. My poem collection Pravas has been blessed by late poet Kusumagraj and Professor Ramesh Tendulkar. I had written 10 plays on various social issues and presented 9 out of them. Today I am going to read a poem. Its name is Navakaviche Dukha. My poem's name is Navakaviche Dukha. Gayana Vadana Ramaviti Rasika Hire Javahira Bhulaviti Strila आभूषणे सजविती सुंदरीला काव्य कल्पना खुलविती मजला क का की करता करता केल्या काही कविता त्या ऐकण्या नसे मजला श्रोता मुलगा म्हणे यमक नसे जुळला पत्नी म्हणे नीज येतसे तिजला संपादक म्हणे जागा नसे कवितेला साभार परतवणे खिजवितसे मजला वाली आता कोणीच नसे उरला कवी मनातुनी तरी नसे थिजला काट्या विना का शोभा येते गुलाबाला अपमाना विना का महत्व येते स्वाभिमानाला अर्ध्या ऐकुंडाने का पिवळे होता येत असे कोणाला टाकीचे घाव सोसल्या विना का दैवत्व लाभते दगडाला थांबू नकोस
लिहित जा सुचेल तसे, पाहूया कोण अडवतो तुला कसे. आहे ना तुझ्या पाठीवर छाप कुसुमाग्रजांची आणि रमेश तेंडुलकरांची, मग तू का करावीस फिकीर कोणाची. काय फरक पडतोय तुला, आहेस तू फकीर. कोण जाणे कदाचित बदलेल तुझे तकदीर. येऊ दे तुझ्या शब्दांना धार, अरे तू आहेसच धार पवार, अरे तू आहेसच धार पवार. उचलते पेन आणि फाडून टाक लक्तरे, जाती भेदाची, विषमतेची आणि भ्रष्टाचाराची. उचलते पेन आणि फाडून टाक लक्तरे, जाती भेदाची, विषमतेची आणि भ्रष्टाचाराची. तुझ्या शब्दाने फाटू देत आभाळ, तुझ्या शब्दाने फाटू देत आभाळ. दुभंगून जाऊ दे धरती आणि उठू देत वादळे, उठू देत वादळे. फुटू देत घाम प्रतिगामी विचारसरणीला, फुटू देत घाम प्रतिगामी विचारसरणीला. येऊ दे जाग झोपेते सोंग आणलेल्या समाजाला, येऊ दे जाग झोपेते सोंग आणलेल्या समाजाला. येऊ दे धुमारे जुन्या खोडाना, येऊ दे धुमारे जुन्या खोडाना. फुटे देत नवांकुर, फुलू देत नवे बाग बगीचे, फुलू देत नवे बाग बगीचे. आणि त्यात बागडू देत सुंदर फुरपाखरे अन पाखरे. धन्यवाद. थँक्यू. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है. Thank you. Milind bhai, please make sure this gets published. Okay. Yes. One request, because these wonderful, excellent poems, and what a rendering. I mean, Thank you, sir. enjoyed the rendering and naach utte hain hum aapka sunke. I'll just add, he is also from GS and my classmate. Very proud of his this. I think GS is the best. If I have to say it. Let's go to, I think next one is, if I announce it already, Kshama Ben is there? Is Kshama Ben there? Kshama Desai, if she's there. If not, then it will be Panna Ben. We're coming to the end almost. Okay, I guess Panna Shah is here. Yeah. Okay, go ahead. Thank you, Kalind bhai. Can everyone hear me? Yes. Okay. So I am Dr. Panna Shah, retired primary care physician living in Florida, US. Somebody is coming in. Now go ahead. Please mute everybody who is not active. Please mute. Thank you. Go ahead. So હું ઘણી નાની બે કવિતા પ્રસ્તુત કરીશ. પહેલી છે કોવિડ પર. ફરીથી આવ્યો જગવ્યાપી રોગચાળો, ખળભળ્યું જગત અને મનુષ્ય જાતો. જીવાણુ નાશક થઈ થકી હાથ ધોઈને, બીજા સર્વથી અંતર રાખી દૂર રહીને. જીવાણુ નાશક થકી હાથ ધોઈને, બીજા સર્વથી અંતર રાખી દૂર રહીને. મોરું પહેરીને મર્યાદિત થઈને આપણે સૌ લક્ષણહીન રહ્યા. જરાક ભૂલ કરી તો સંપર્ક ટ્રેસિંગ આવ્યું, જરાક ભૂલ કરી તો સંપર્ક ટ્રેસિંગ આવ્યું. સ્વ આઇસોલેશન અને ક્વોરન્ટાઇન પણ કર્યું. સ્વ આઇસોલેશન અને ક્વોરન્ટાઇન પણ કર્યું. બધે વધ્યું તો લોકડાઉન પણ આવ્યું. બધે વધ્યું તો લોકડાઉન પણ આવ્યું. નાના વાયરસે તો ગજબ રમખાણ કર્યું. હવે તો બસ એક જ ઉપાય, બધું જ સાચવીને અને રસી લઈને ટોળાની પ્રતિરક્ષા જ કરીને આ વાયરસનો વળાંક સપાટ કરીએ. ફરીથી આપણે સર્વએ બનતા પ્રયત્ન કરી COVID-19નો અંત જ લાવીએ. અને બીજી તેના કરતા પણ નાની છે, જે આજને માટે અને આપણા તરફથી કલિનભાઈને ખૂબ જ જસ આપવા માટે આ લખ્યું છે મેં. સુંદર છંદ અને રચનાઓથી આ શરૂ થયેલ, સુંદર છંદ અને રચનાઓથી આ શરૂ થયેલ નવા જ કવિ
અને કવિયત્રીઓની કવિતા જાણે નવા જ કવિ અને કવિયત્રીઓની કવિતા જાણે સૌ ખંતથી અને ઉત્સાહથી નવી જ લહેર લાવ્યા. સૌ ખંતથી અને ઉત્સાહથી નવી જ લહેર લાવ્યા. એ જ ઉત્સાહે આજે વિશ્વમાં ખળભળાટ કર્યો. આપણે બધા જ જોડાયા. એક સેકન્ડ. અને જુદી જુદી શૈલીમાં રંગોનો વરસાદ વરસાવ્યો. અને જુદી જુદી શૈલીમાં રંગોનો વરસાદ વરસાવ્યો. કલિંદભાઈના પ્રયત્નોથી આ સંમેલનમાં અનેરો રંગ લાવ્યો. કલિંદભાઈના પ્રયત્નોથી આ સંમેલનમાં અનેરો રંગ લાવ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you. Excellent. So, let me see. Okay. Is Asha Ben there? Asha Ben is not there, right? So I think it's wonderful to have the first round done. I'm going to present something that hopefully will be enjoyed. I have to look it first so that it's about. I want to see one thing. Just one second. I'm going to try to do this. I've recorded this, and I've been speaking a lot, so I don't know how my whistling will go. I'm going to try to whistle with the with the karaoke here. So I'll see how that goes. Yes, it's karaoke on top of karaoke. This is a new thing.
That was, was attempt. So that's what Wow, sir. Very nice. fun to. It's Fun to It was amazing. wonderful Actually, it's whistling and amazing. inspiring. Yes. Thank you. Thank you Kalind very bhai, much. how about one more? One more. One more. Yes. One more whistling song. Yes. What is stamina? Wow. It was not audible properly. It was not audible? Yes. Okay. Okay, I'll do. On my side, it was very good, actually. I heard very clear. Okay. तरन्नुम में करेगा तो. This is a this is a sample of what I call as Visalakshari. I keep on doing this one after the other song I enjoyed. It's just one that I have. Somebody is unmuting. Somebody has to unmute. I don't know who that is. Please unmute. Santosh G, unmute karo. Mute karo. Santosh G. Yes. Santosh G, kya hai? Can you? Yes, sir. Santosh Gule. Sorry. Okay, Amara timer is off right now. I'm going to not time anybody. This is thank you very much. I really want to say a couple of things before we turn over to the coordinators and have introductions. Introductions first. I would have to appreciate every one of you. I think it's just amazing to have gotten together, everybody from around the world and to be able to accomplish this. Everybody's cooperation and wonderful sharing was really appreciated. So first I'll invite Milinji to unmute
and take about 5 minutes or so to introduce whosoever is around here or whatever he has to say about the group. And so Milinji, over to you as a wonderful, helpful coordinator for this event. You invited so many excellent ghazalkars and singers and all. Go ahead, Milinji. Thank you very much, sir. It's almost 2 hours, and I have been observing that attendance is always 30 plus. This is something unusual. I have attended many mushairas, many sammelans. People, they just walk away or run away after presenting their ghazal or poem. So this has not happened. It's only because of you and your very well organized this one. And the quality. Say, I consider myself as a student of poetry and ghazals. I got opportunity to hear some of the excellent poems, ghazals, singing, and of course flute also. There was some voice disturbance, probably maybe from my side, but it was the program was too good. Means I have not seen any Zoom meeting going on for such a long time with such a interesting this one. So let me introduce briefly myself and then those who my group. I am Dr. Milind Shejwal. I am staying in Mumbai, and just one month, last Kavya Sammelan I attended from USA, Columbus, Ohio. So I was in USA 1 month back. Uh, I am from GS Medical College, Kalind Bai's junior, about 12 years junior to Kalind Bai. And he is in ठंडी आ गई मुंबई में, प्लीज हो गया जी। कनेक्शन का यही है, maybe internet issue. internet issue. Yeah. Okay. While he's coming back, maybe Kalpana ji can unmute. And Kalpana ji, आपके लिए आप इंट्रोड्यूस कीजिए। जी करती हूँ जी। आप ले लीजिए। जैसे ही मिलिंद जी आते हैं तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे। जी नमस्ते। मैं हूँ कल्पना कवरे। एक्चुअली अभी मैं यूके में हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में थी और 35 इयर्स का मेरा जॉब हो चुका है। और मेरी एक संस्था है स्नेहल आर्ट्स एंड एजुकेशन सोसाइटी। हम लोग हर देश में जाके अलग अलग कविता प्रकाशन करते हैं, कवि सम्मेलन लेते हैं, गजल सम्मेलन लेते हैं। इस बार हमारे साथ कलिंद भाई जी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कलिंद भाई, और आपके मिसेस भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर राजन लाखे जो यहाँ पे आए हुए इस ग्रुप में, वो हमारे साथ जो है वो सम्मेलनाध्यक्ष करके रहेंगे। तो इस ग्रुप में मेरे बहुत सारे गुरु हैं। एक तो कलिंद जी हैं, फिर रेणुका भारस्वारकर सर जी हैं, ये हमारे गुरु हैं। फिर क्या रविंद्र सोनावने जी हैं, ये भी हमारे गुरु हैं। मकरंद गोंधली, ये भी हमारे गुरु हैं, ये पपेट के गुरु हैं। और गजल के लिए रविंद्र सोनावने और रेणुका भारस्वारकर जी, ये हमारे गुरु हैं। तो इतने सारे गुरु मेरे साथ रहेंगे और आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे जाने की से रह नहीं पाएंगे, है ना। तो इनके बजाय, इनके बदौलत ही हम बहुत आगे जाने की कोशिश। बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इसके बजाय मैं एक पपेटियर हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से मेरा कोर्स हुआ है। यूके में मेरे 20 प्रोग्राम हुए हैं, यहाँ का एक पपेटी का अवार्ड है। और भारत में मेरे 150 प्रोग्राम हुए हैं। मेरे पास 550 पपेट्स हैं। और मैं गजल लिखती हूँ, एक कविता संग्रह है मेरा भावना। और मैं रेडियो जॉकी भी हूँ, यहाँ मैंने काम किया हुआ है यूके में। और भारत में मैं अलग अलग जगह पे अपने एंकरिंग का काम करती हूँ। मुशायरा में मैं एंकरिंग करती हूँ और गजल पेश करती हूँ, कविताएं पेश करती हूँ। तरन्नुम में
गाना मुझे बहुत पसंद है। आज तक मैंने 550 कविताओं को मैंने मतलब म्यूजिक दिया हुआ है, चाल दी हुई, और मैं सुनाना चाहती हूँ सबको। इसीलिए वो मेरी एक छोटी सी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, एक्चुअली वो छोटी नहीं कहूंगी मैं। तो ये जो मुझे जो अभी जो मिला है ये इंटरनेशनल लेवल पे, ये बिल्कुल कलिंद भाई के कारण ही मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ उनका। और इसके बजाय हम लोग एक क्या करते हैं कि अलग अलग देशों में जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन। मेरे साथ नेशनल और स्टेट अवार्डी टीचर्स रहते हैं जिनका हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन करवाया था बाली में। थाईलैंड में हमने पपेट शो किए थे, बाली में भी किए थे। लास्ट ईयर हम लोग दुबई जाके आए, वहां पे कविता संग्रह का प्रकाशन और कवि सम्मेलन लिया था। अब हम लोग नेपाल में जा रहे हैं। हमारे साथ 30 लोग हैं। सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर राजन लाखे हैं, डॉक्टर ये अपने प्राध्यापक मकरंद गोंधली हैं, वो तो शिक्षण क्षेत्र में शिक्षण उपसंचालक है। और मेरे साथ जो अभी डॉक्टर संजय जगताप है, उनकी तो 5 पुस्तकें प्रकाशित हुए हैं। अभी जो लावनी सुनी वो भी डॉक्टर रासगे, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं नेपाल में। और वो तो पोवाड़ा में उन्होंने पीएचडी की है। पोवाड़ा इट्स साहित्य का एक प्रकार है। और डॉक्टर रेणुका भारसवाड़कर एक बहुत बड़ा ग्रुप चलाते हैं। उनके अंडर बहुत सारे उपक्रम होते हैं, गजलों के बहुत अच्छे अच्छे वो स्पर्धा लेते हैं, और उसमें पारितोषिक भी देते हैं, बहुत सारे इनाम दिए जाते हैं, और बहुत अच्छे मुशायरे वो अरेंज करते हैं। तो मैं बहुत बहुत ही मैं क्या भाग्यवान हूँ कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब एक साथ जुड़ के और कुछ कर सकते हैं, है ना, जैसा कलिंद भाई कहना चाहते हैं। तो मेरे साथ जो 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 लोग जुड़े अभी, हाँ, डॉक्टर नितिन उपाध्याय वो हमारे साथ दुबई में थे। वो भी बहुत बड़े अच्छे बहुत बड़े डॉक्टर है। वो कॉलेज में जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसके बजाय वो हिंदी की गजलें, उनके साथ भी हमने मुशायरा किया हुआ है। दुबई का उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो हमारे प्रोग्राम में उनको हमने अतिथि करके बुलाया था। उसके साथ उनके साथ भी और भी मैम थी, वो भी आई थी दुबई से। तो इस तरह हम लोग हमारा एक क्या बोलते हैं कि इंटरनेट बन चुका है कि हम अलग अलग जगह जाके अपना ये सब पेश करते हैं, है ना। तो कलिंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रेजेंट करने के लिए मौका दिया, और हम सब साथ में जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी, आपने सबके परिचय करवाया। और ये Kalind bhai, I missed the communication in between. So briefly, I'll just आपको देंगे introduce. एक मिनट एक मिनट। हम कल्पना जी से कहने वाला है कि इन्होंने इतने से इतना सबका परिचय दिया, सब लोगों को हमारा प्रणाम है। आप लोग आए यहाँ पर, बहुत हमें बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बहुत धन्यवाद आपका। And we really look forward to having more such programs. So that's that. मिलिंद भाई, आप अभी शुरू कीजिए, आप परिचय देने का। Yes, yes. So I'll start with Santosh G, Santosh Gurla Oshur. He is a fine musician. He has tuned my ghazals on his own and my bhajans also, and they are already available on YouTube. He himself is a good musician and a very good voice with baritone. Unfortunately, last month, I think 29th of this one, July, we had one preparatory meeting for last 12th August meeting. He was there, he participated actively. His father was sitting next to him, and within 3 days he expired. So last this one he could not participate in that. But again, a very fine this one is a executive engineer in Wipro and doing lot of work in rural upliftment. He was in USA for 4 years and working for Seva International. Another this one, Chandraprakash Dokwal, is again my classmate from GS. So GS 74 batch, we had 3 representation. Dokwal is chest physician with a very good voice, very good range, and a very good ghazal writer. Then Dilawar Hussain, unfortunately, is an orthopedic surgeon, so maybe busy with his emergency. He also writes very good Urdu ghazals. I'll mention about Vibhavari ji. Vibhavari ji
is my schoolmate. We are from same school, same class, and our association is more than 50 years. I'll tell one thing about she is a renowned classical singer of Kirana Gharana, and she has the honor of participating in Gandharva Mahotsav, where Bhimsen Joshi himself was singing. So very this one. And she has got sadhana of 50 years in classical music. And I am fortunate many of my ghazals are sung by Vibhavari ji. Hats off to Vibhavari ji. Shrikant Harpawar ji, again my classmate. And he is a family physician, but he has written 10 dramas in Marathi and produced them, acted in that. So hats off to his multi-talented this one. He is a poet also and got many prizes for his literary work. And I am fortunate to have company of all these people. Madam Noor Sabha Sayan, she is also a very good Urdu writer, and maybe in future we'll be listening to them frequently. Today, Charudat Meher sir could not attend because he is in rural area, so connection was a problem. But he is again means whatever little I know of this one poetry, it is because of him, and I'm really happy to announce that he is teaching some of our Chalo Kavita Kariye group. And really, it's an honor for both, for sir also and to his students also. So this was a brief introduction. Kedar Gopal Dhadphale ji. We have one group in KM, Gosu Art, where all artistic this one is presented. And he used to like my ghazals very well. So one day he called me and he said, I am also from GS. Age, he said, I am 97-year-old. And the way his enthusiasm, his voice and presentation. His wife was a very good classical singer. And the positivity what I see in Gopal Dhadphale is too good. His son, today, father and son participated in this. His son is 58 years old and again a very good singer, very good music composer, very good ghazal writer. So we had a galaxy of people in our this Kavya Sammelan. And Madam Shobha, she is again very good. Her presentation was excellent. And the group, so many people had to refuse them because they wanted to have entry at last minute, which was not possible. But I am very sure in next Kavya Sammelan, we'll have a few more this one added to our group. And regarding Chalo Kavita group, I am associated with this group for 8 months. I got opportunity to write many Gujarati ghazals, haiku, kavita, and they were highly appreciated. I'm really happy and thankful to all of you. I'll request all those who came here for the first time to join this group, Chalo Kavita Kariye. It's a though the name is in Gujarati, now it is a multilingual group where right from Sanskrit, English, Marathi, Gujarati, Hindi, all work is presented and all work is appreciated. So those who presented today, you must like present your work in this one. And as I said, Kalind is coming to India in December. So planning to keep one live this one in KM Hospitals, MLT.
Let us see it works, and it should be a grand live program. Working for it, if everything goes well, we should be in a position to do that. So once again, thanks Kalind Bhai for giving me opportunity to express myself. No, I really appreciate what has happened in this. I cannot even imagine. इतना सब phenomenal growth हो गया immediately. और क्या बात है कि हम एक बात कहना चाहेंगे सबको कि हमारी शुरुआत हुई ना वो पन्ना बेन से हुई पन्ना बेन डॉक्टर पन्ना शाह अभी हम तो लिखते थे हम हमारे कुछ कभी हॉल में होके हम कुछ हमारे कुछ ना कुछ ऐसा बुक में लिखते थे and we were just I was just writing my own thing I was in my own world तो फिर कभी कभी पोस्ट की कविता तो पन्ना मैंने बताया भाई your poetries are very good I can't write it I said anyone can write poetry I had to say something like that I don't know some stupid sometimes our mind goes somewhere else anyone can write poetry she said why I said you know that as children we are born we don't talk prose we don't learn grammar grammar comes later we cry in poetry we actually cry in different swara you know different types of swara everybody has different swara so sangeet and poetry is from the beginning in fact the arrangement of the all the words that come later so it should be very easy so I'm hamara kya stupid काम है वो time anyone can learn I can teach you that's how the whole thing started and I'm not a teacher I'm not a teacher by any means I just I'm just a simple doctor cut and sew and then pray that's the type of doctor I am so what happened Pannaman encouraged me and said okay so But from 1 to 40, let us all clap for Kalind Bhai. I know. No, but it started that way. And then number of people joined. And those who are present here, I'll mention a couple of them, all of them actually, they're wonderful. Kalpana from Baroda. She's well published. She does programs on radio, and also she writes extremely well particularly about the current situations that are going on. Very bhavuk, very emotional poetry. Fantastic writer in both Hindi and Gujarati. And then comes Mahesh Bhai. Oh my goodness, we learned so much from him, and he's got very great command on Urdu, and so he writes in Urdu and Gujarati. And so, we have been buddies all along. And then comes joining here, who is here, still here. I think many of the people have sort of disappeared because they may be like, feeling, I don't know what it is. And then the new edition now has Dr. Preeti Ben. Oh my goodness, she's a force. She's also right. Hey, there is Daksha Ben. There it is. Daksha Ben is there. I just saw her. She's also my cousin sister's classmate, so we know her too very well. She writes. So we have a wonderful group. But the way it started, and here is what I want to focus on. So I appreciate everybody being here. Excuse me. The way I want to focus on is this. When you write a poetry, pratibhav and pratikavya, these are the two fundamental tenets of Chalo Kavita Kriya. We give pratibhav, we talk in poetry. Please do not avoid prose. When we call conversation in poetry, and then pratikavya. Pratikavya means, whatever you've been said, one kavi has some idea about that. And we have a different way of putting the same thing, and we are all excellent poets and ghazalkars. So that is the tenet of the Chalo Kavita Kriya. And I invite everybody's participation. So, and please don't be surprised if your ghazal or your poetry is being interpreted differently, written differently. रस का चेंज हो जाता है आपने लिखी करुणा में होती तो हास्य हो जाता है हास्य में से करुणा हो जाता है वगैरह 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 I mean we have been playing around with this for 3.5 years Shaila Munshaw I see her now somehow I didn't notice her she is fantastic she's a Gujarati poet and
She writes very well. She just recently moved from Texas to now back home to Baroda. But she's another excellent, and I learned so much from her. She writes in really ghazal, and she is fantastic. So that's the introduction I have, and I invite everyone. Please, join the group and make it happen. That's basically the invitation I have. Anyone else wants to say something before we start concluding this? I would like to say something before we leave, Sure. actually. I'm very thankful to Kalind Bhai regarding timing and conducting well this Sammelan. And everybody was excellent. I was learning a lot from every single person who participated today. I hope you guys like my event. So please give me heads up. And then thank you so much for listening me. And I'm very, very thankful to everyone who joined us. And please keep in touch. And we will be growing, and we're going to grow more, and we're going to learn more. Thank you so much. Kalind Bhai, this is like a more of a sanskar channel and more of a rituals. And we are maintaining our culture through Kalind Bhai by collecting all the different poets from different parts. So it is like a more of a melting pot of culture and our rituals and our sanskara. So I feel it's very beneficial to all of us. Thank you, Kalind Bhai. Now we have a guest here, Shobha Modi. He has been observing us. He attends so many such musharas and things like that. If he wants to say something, he's a good friend of ours. Thank you, Kalind Bhai, for a kind introduction. I am not a kavi or ghazal writer or anything like that, but I do enjoy ghazals, and particularly I like the ghazal songs in a music form. And I saw your post and immediately inspired to tune in. Program is excellent. All the talents what you have from India and all over the world is outstanding. Every minute always enjoyable, and look forward to enjoy your programs every time. Thank you so much, and thanks everybody. Okay, thank you. So on that note, Gratitude is my attitude. Thank you, Kalind Bhai, and everybody else. Appreciate. Thank you. Namaskar. Thank you. Shailaben બોલવું છે કે તમારે unmute કરો please unmute. Shailaben, unmute. આજનું આયોજન ખૂબ જ સરસ હતું. ઘણી બધી મહેનત એની પાછળ હતી અને બહુ જ સમયસર બધાએ 4 મિનિટનો જે સમય આપ્યો હતો એનો બરાબર ઉપયોગ કરીને પોતાની કૃતિ રજૂ કરી. એ માટે બધાને ધન્યવાદ અને કલિનભાઈની એની પાછળની મહેનતને માટે સેલ્યુટ. Obviously, I'm learning so much, and I've been using the timer for my recording and things. She knows that. This is the first time I did that. I hope it did not bother people, and it's my experience that it helps a lot more. So there are so many apps that I will learn from Santosh G. Zoom is a very excellent platform, and it's getting better and better. And please explore anyone who uses Zoom. Please do so, and